Hi guys, I hope you all are doing good, and today we are again here to learn about science, class 7 science. And we were studying nutrition in plants in our last session, and we have learned all of these. We have learned why the nutrition is important for us. We have learned how nutrition is, what are the types of nutrition. We have learned about autotrophic nutrition, we have learned about heterotrophic nutrition, and we have learned about the process of photosynthesis, how it takes place, what gases are exchanged, what do the plants use while photosynthesis. We have learned they use sunlight and chlorophyll and carbon dioxide. We have learned about all these things, and what are the food factories of plants. We have learned the entire process of photosynthesis. I hope you all remember that. And after that we have learned about the leaf of the food factories of plants, about leaf, what make the exchange of gases, like carbon dioxide कैसे लेते हैं plants through stomata on the leaf, right? So yes, we have learned all these things, and we have also learned about there are some plants also who are heterotrophic, or we can say they are parasites. We have learned about Cuscuta the plant, this one, where it has a host plant in which it lives, on which it lives, and it is basically it basically depends on the plant for its nutrition. The plant Cuscuta is called a parasite. So we have learned about parasite as well. And today we will learn about saprotrophs. So saprotrophic nutrition is the third kind of nutrition. We have learned about autotrophic, we have learned about heterotrophic. So the last one is saprotrophic nutrition, and the organisms that have this kind of nutrition are called saprotrophs. So what saprotrophs are, let's learn about that. So you might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You all must have seen mushrooms, right? They are white in color. You must have also eaten mushroom dishes, yeah? Okay, so you may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. तो जब बरसात का मौसम होता है तो आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी में एक अम्ब्रेला लाइक एक इस तरह की, जैसे आप देख सकते हो, इस तरह का कुछ उगाता है मिट्टी में. So and this happens in the rainy season only. So ये जो these kind of organisms, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. सो वी हैव टू फिगर आउट दैट. ओके, ये कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ना तो ये ग्रीन है, ना तो इनके पास क्लोरोफिल है, ना ही ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन? So that is a very interesting question, and Bujo also wants to know how these organisms acquire nutrition. They do not have mouths like animals do. हमारे जैसा मुंह इनके पास नहीं होता है. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. photosynthesis से भी ये food नहीं बना सकते हैं, ना ही हमारी तरह खा सकते हैं. तो कहाँ से इन्हें अपना न्यूट्रिशन मिलता है? Placed for 2 to 3 days and or until fluffy patches appear on them. So अगर आप इसको 2-3 दिन रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको उस पर कुछ फ्लफ़ी पैचेस दिखेंगे, वाइट, ग्रीन, कुछ काइंड ऑफ
that in color. You can see these patches. What is the color of these patches? You can find them white, green, somewhat in between this color. Okay, you can also see it here in this picture. So what is this? What are these fluffy patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton like threads spread on the piece of bread. You will see cotton like threads spread on the piece of bread. Okay, so what are these cotton like thread uh, spread on the piece of bread? What are these? So these organisms are called fungi. These are called fungi. आपने देखा होगा ब्रेड, जो खाना ख़राब हो जाता है कई बार, breads and even piece of chapati and even your uh, your vegetables, they उनके ऊपर एक वाइट वाइट सा कुछ जम जाता है जब वो ख़राब हो जाते हैं, तो दैट वाइट काइंड ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड फंगाई. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो हमारे जैसा होता है ना वो प्लांट्स के जैसा होता है. सो इट इज़ नाइदर इट इज़ नीदर ऑडोट्रॉपिक और नीदर heterotrophic. They absorb the nutrition from the bread. So here they are getting the nutrition from bread. ब्रेड पे जमे है तो ब्रेड से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, सब्ज़ी पर है तो सब्ज़ी से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, रोटी पर है तो रोटी से न्यूट्रिशन मिल जाएगा. सो बेसिकली जिस चीज़ पर ये फॉर्म होते हैं उसी से ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. इन दिस केस this mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. So basically खाना ख़राब हो गया है, bread ख़राब हो गई है, तो it is, you can call it dead and decaying. So जो organisms इस तरह की matter से अपना nutrition लेते हैं इसे बोलते हैं saprotrophic nutrition. So I have given you an example of fungi. They are basically saprotrophs. So such organisms with saprotrophic nutrition mode of nutrition are called saprotrophs. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं saprotrophs. Okay, so now fungi also grow on pickle, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. So fungi को आपने pickles पे भी देखा होगा, and they even grow on leather clothes. लेदर लेदर का कुछ भी आपका शूज़ वगैरह कुछ भी लेदर का कुछ है, और क्लोथ्स, यू कैन ऑल्सो फाइंड देम ऑन क्लोथ्स. ओके, वट एवर इज़ लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. ह्यूमिड वेदर कब होता है? जब बरसात होती है. बरसात जो सीज़न अभी फ़िलहाल चल रहा है, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा फंगाई देखने को मिलती है. ओके, सो you can ask your parents about the menace of fungi in your house. आप पूछ सकते हैं because they counter a lot of examples in their real life of fungi basically. So we have learned about saprotrophs and we have figured an example which is very common. So now the fungal spores are generally present in the air. So जो fungal spores होते हैं वो हवा में present होते हैं. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. When these spores land on wet and warm things, basically moist and warm things, they germinate and grow. Okay, now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? So अब
फंगाई आपकी खाने पर लग रही है, आपके क्लोथ्स पर लग रही है, आपके शूज़ पर लग रही है, तो आप उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा ना. So you can explore and figure out these solutions to get rid of fungi. Okay. Now what does Bujo wants to know here? Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. So yes, fungi can also spoil your fields. It can also spoil your crops. फंगाई ना सिर्फ आपके खाने को आपके कपड़ों को ख़राब करती है, इट इवन डिस्ट्रॉयज योर fields, your crops. Okay. And yes, it can also cause disease. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful. Yes, there are useful fungi as well. These are yeast and mushrooms. Mushrooms you eat, and yeast presents in your bread and a lot of things. A lot of edible things are useful, but some fungi causes disease in plants and animals, including humans. Some fungi are also used as medicine. So fungi are of all types. It is useful as well as harmful. So it can also create some kind of diseases, and it can also cure some kind of diseases because it is used in medicines as well. Okay. And some fungi destroys your food, and some fungi makes your food. Yeah, like bread. And mushroom is also a kind of fungi, so you eat it, right? So some are edible as well. So now some organisms live together, share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. So there are some organisms that live together and share both shelter and nutrients. So they are basically in a relationship where one provides shelter and one provides nutrient, and they can both share the same as well. So this kind of relationship is called symbiosis. We will see an example of that. For example, certain fungi live inside the root of plants. So there are some fungi that lives in the root of the plants. Okay. So what happens between both of them is the plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. So क्या होता है, plants nutrients provide करते हैं fungus को, plants provide nutrients to the fungus, और उसके बदले में fungus उसको क्या provide करता है, water and certain nutrients. Okay. So fungus रहता है plants की roots में. किसके बदले? अब ऐसे तो कोई रहने नहीं देता है आज के टाइम में. आप कहीं भी जाएं, आप कहीं फ्री में नहीं रह सकते हैं. तो सेम इज़ विद fungus as well. Fungus lives in the roots of plants. So obviously plants are gonna get something from them. So what they get is they get water and certain nutrients. वो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं फंगस से, और फंगस भी उनसे न्यूट्रिएंट ले रहा है. सो दे बोथ आर शेयरिंग द न्यूट्रिएंट्स. सो प्लांट क्या देता है फंगस को? न्यूट्रिएंट्स, एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन अदर न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. सो they are basically depend on each other, and this relationship between both of them, where one provide one thing and other provide the other thing, this relationship is called symbiosis. Okay. So I hope symbiosis is clear to everyone. And yes, this is also an example of saprotroph. Okay.
In organisms like lichens, there is an organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together. So lichens में क्या होता है, एक chlorophyll containing partner होता है which is called alga and एक होता है fungus. This is another example. Okay, so lichens में क्या रहते हैं, alga और fungus. They both live together, in which one of the partner is chlorophyll containing. It has chlorophyll. So the fungus provides shelter. फंगस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है टू द alga, and in return the alga prepares food and provides food to the fungus. So basically the raw material कौन दे रहा है alga को, fungus, and fungus is preparing food. So the job of fungus is to bring raw material and food is being prepared by alga. So both of them are living happily together. The fungus provides shelter, water and minerals. Shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares food and provides food to the fungus. Okay, so this is also an example of symbiosis. The relationship between them is called symbiosis. Okay, now how nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manures or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Okay, so you must have seen farmers जो होते हैं, किसान जो होते हैं, अपने खेतों में कुछ fertilizers और कुछ manure which is known as खाद, ये सब डालते हैं अपने खेतों में to nourish them and to prevent some kind of diseases in the plants and to grow more. Okay, to increase the fertility of soil. You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. So हमने पढ़ा था photosynthesis, जब हमने पढ़ा था, जब हमने mode of nutrition पढ़ा था in plants, we have learned that plant absorb minerals and nutrients from the soil. उनको mineral और nutrients कहाँ से मिलते हैं, soil से. So their amounts in the soil keep on declining. तो अगर आप किसी चीज़ से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, लगातार मिनरल्स ले रहे हो, तो एक टाइम पे वो कम होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एट्सेट्रा. सो इन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, ये मिनरल्स होते हैं, क्या, नाइट्रोजन, potassium and phosphorus and many more. These are important: nitrogen, potassium and phosphorus, NPK. So in fertilizers में ये minerals जो होते हैं ये present होते हैं. तो ये जो fertilizers होते हैं they are basically compensating for this declining. जो nutrients plants इनसे, जो minerals plants soil से लेते हैं, we have to compensate for it. So हम इसलिए मिट्टी में ये fertilizers add करते हैं so that they can get nutrition from it and plants can keep on getting nutrition from them, okay, from the soil. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. So ये जो कमी है इसको पूरा करने के लिए हमें इन fertilizers को टाइम पर ऐड करना होता है, तभी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे, जो मिनरल्स हैं वो बने रहेंगे, सो दैट प्लांट्स कैन गेट देम एंड प्रिपेयर द फूड. ओके, सो बेसिकली टू एनरिच द सॉइल we need to add these fertilizers to these nutrients to
to enrich the soil. Basically, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम जब तक प्लांट्स को मिट्टी से मिनरल्स नहीं मिलेंगे तब तक वो भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हम प्लांट्स को तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम हमें भी कुछ देना पड़ेगा. सो दीज आर दीज फर्टिलाइजर्स जो हम ऐड करते हैं अपनी सॉइल में टू enrich it with minerals so that plants can get it. So basically this is a cycle. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. जो crop plants होते हैं, crop as in wheat and there are many crops. So जो ये crops होती हैं, rice and all, ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करती हैं. और अगर ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करेंगी तो मिट्टी में नाइट्रोजन कम होगा, राइट? हमने यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर बट प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से वो हवा में से नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाइट्रोजन उनको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है जो मिलती है सॉइल से, ना कि हवा से. हवा में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, वी नो दैट, बट हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं प्लांट्स को नाइट्रोजन लेना पड़ेगा मिट्टी से. सो मिट्टी से अगर वो नाइट्रोजन लेते रहेंगे तो एक टाइम पे सॉइल विल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. उसमें उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी. सो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है. द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. तो फिर कहाँ से आएगी नाइट्रोजन? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम. Here you can see it. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम. It can take the atmospheric nitrogen. वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेता है and convert it into a form that plants need. ओके, सो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और प्लांट्स को देता है इन द फॉर्म दैट दे नीड. जिस फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके कौन देता है? राइजोबियम. ओके, राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया. एंड बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड लाइक अस. राइजोबियम भी अपना फूड अपने आप नहीं बना पाता है. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. So where does it live? Rhizobium कहाँ रहता है? It lives in the roots of these plants, gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और क्योंकि वो उन्हें नाइट्रोजन देता है, इसके रिटर्न में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. वो उसको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज इट लिव इन देयर रूट्स. सो दिस इज अगेन अ symbiotic relationship. This is also an example of symbiosis. Okay. So we have learned 2 to 3 example of symbiosis and this is very important. Thus association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. सो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर
राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. सो वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत हमें कब पड़ी थी? जब नाइट्रोजन की कमी हुई थी या फिर और मिनरल्स की कमी हुई थी मिट्टी में. बट यहाँ पे क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, this rhizobium bacteria presents in the root of these plants, so it converts the atmospheric nitrogen, which is plenty in atmosphere. Yeah, it is very much in atmosphere, so it can convert this nitrogen into the usable form. So यहाँ पे हमें fertilizers की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. And these plants are most of the pulses, जैसे हमने देखा भी है. These examples: gram, peas, moong, beans. Okay, so these are most of the pulses. Dal are obtained from leguminous plants. Okay, so in this chapter you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. Okay, they derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. Since they depend on plants and other animals for food, can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, we can say that because it eat insects. So yes, we can say that all animals are categorized as heterotrophs, क्योंकि हम तो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं in any way. So we are heterotrophs and we depend on plants and other animals for our food. So most of the plants are autotrophs, all the animals are heterotrophs, and some of the plants, a little bit of plants are parasitic or saprotrophic. Okay, so now there are some questions. Let's take them and let's try to do them. So हमने जो भी अपने चैप्टर में सीखा है, let's quickly recall all of them through this exercise. Why do organisms take food? Food क्यों लेते हैं organisms? Why? This is very simple: to survive, because we all perform some sort of actions in our daily life, so we need energy for that, and that energy comes from food. So that is why for the survival we need food. Okay, now the next one is distinguish between a parasite and a saprotroph. So parasite हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल पैरासाइट का, विच इज़ कस्क्यूटा, अ प्लांट. सो वो क्या करता है, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए एक प्लांट पर रहता है, एक प्लांट विच इज़ कॉल्ड इट्स होस्ट, एंड इट डिपेंड्स ऑन इट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट फॉर इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स आर काइंड ऑफ क्या बोलना चाहिए, दे हैव देयर ओन things that they can they basically live in a symbiotic relationship with their host, you can say, or their partner, you can say. वो कुछ ना कुछ अगर वो न्यूट्रिशन लेते हैं अपने पार्टनर से, सो वो कुछ ना कुछ बदले में देते हैं. बट पैरासाइट, दे डू नथिंग फॉर देयर होस्ट, दे जस्ट टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ इन जनरल वे. How would you test the presence of starch in leaves? So we can perform iodine test. हम iodine test कर सकते हैं to just a second. Yes, we can perform iodine test. What we can do is
we can take leaf of a plant and we can remove its chlorophyll by boiling this leaf in alcohol solution, एंड देन उसके बाद हम 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की उसके ऊपर डालते हैं, तो उसका जो कलर उसका ना कलर चेंज हो जाता है, इट बिकम्स ब्लू, सो दैट proves the presence of starch in it. Okay, so we can perform iodine test to test the presence of starch in leaves. Now the fourth one is give a brief description of the process of synthesis of food in green plants, which is photosynthesis. So they need to know about photosynthesis. So photosynthesis में क्या हुआ था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. उससे क्या होता है, उससे क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, एंड ऑल्सो दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज components together give rise to glucose and oxygen. So हमें क्या मिल जाती है, हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और फूड मिल जाता है, और बदले में हमें उनको क्या देना पड़ता है, क्लोरोफिल. दे ऑलरेडी हैव सनलाइट एंड वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ photosynthesis. Okay, show with the help of a sketch that plants are ultimate source of food. So we can draw a sketch. Why plants are the ultimate source of food? Because so basically there are vegetarians, non-vegetarians. So we can in science language we can say herbivores and carnivores. So जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और कुछ जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. बट इवेंचुअली जो दूसरे एनिमल्स होते हैं दे डिपेंड ऑन द फूड, दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट अगेन. सो इनडायरेक्टली दे ऑल्सो डिपेंड, द कार्निवर्स, जो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. सो दैट इज़ वाई प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. Green plants are called something since they synthesize their own food. So they are called autotrophs. क्योंकि ये अपना फूड अपने आप बनाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, autotrophs. Okay, they have the autotrophic mode of nutrition. B, the food synthesized by plants is stored as, जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, हमने पढ़ा था ये अपने चैप्टर में. इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, or we can say carbohydrates or starch. In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called, what is that pigment that absorbs the solar energy during photosynthesis? So it is chlorophyll. Okay, it is chlorophyll, or chlorophyll is that pigment that allows plants to perform photosynthesis. जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, जो ग्रीन नहीं होते हैं, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, सो क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ डी इज़ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन something and release something gas. So we know that they take in carbon dioxide and release oxygen gas. Okay, oxygen that we breathe. So even for our respiration we depend on plants, okay, because they give oxygen. All right, now
The seventh is name the following. A parasitic plant with yellow, slender, and branched stems. So, which was that parasitic plant? It was Cuscuta. All right, Cuscuta. Now, a plant that is partially autotrophic. Which plant is that which is partially autotrophic, not completely autotrophic? So you must remember we have learned about an insectivorous plant which was pitcher plant. Okay, that eats insect, so it is partially autotrophic, not completely autotrophic. Okay, that is why इन्होंने कहा है partially autotrophic. All right. Now the pores through which leaves exchange gases. तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनके ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो व्हाट आर दीज टाइनी पोर्स कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा. Okay, stomata. Now eighth is tick the correct answer. Okay, so what is the first question? Cuscutan is an example of autotroph. Autotroph, is Cuscutan an autotroph? No, it does not prepare its own food. In fact, it does not have chlorophyll. Parasite, saprotroph, host. So what is Cuscuta is an example of? It is an example of parasite. It is a parasite. It depends on its host plant for its nutrition. So it is called parasite. उसी के ऊपर रहता है, उसी के ऊपर खाता है. Okay, उसी से खाता है. Okay. Now B, the plant which traps and feeds on insects is called Cuscuta, China rose, pitcher plant, rose. No, I can't think of Cuscuta. Cuscuta तो अपने होस्ट पर डिपेंड करता है. China rose, no. Rose, no. Pitcher plant, yes. Pitcher plant is the insectivorous plant which eat insects. पहले उनको ट्रैप करता है और उसके बाद उनको खाता है. Okay. Now ninth is match the stem given in column first with those in column second. Okay, so chlorophyll. Okay, chlorophyll, I think leaf, isn't it? कहाँ present होता है chlorophyll? It is present on leaf. Okay. Now nitrogen के बारे में हमने अभी पढ़ा है. It is related to the bacteria rhizobium. Rhizobium क्या करता है? Rhizobium bacteria क्या करता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है. एंड इट लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये रहता है और ये उनको नाइट्रोजन देता है. इन रिटर्न इट गेट्स फूड फ्रॉम देम. Okay, Cuscuta is a parasite. We have learned about it a lot of times. So Cuscuta is a parasite. Animals क्या होते हैं? Animals heterotrophs होते हैं because they depend on plants for their food. They possess heterotrophic mode of nutrition. Okay. Now insects are related to pitcher plant because they are being trapped by pitcher plant and then being eaten by it. Okay, so pitcher plants insects खाता है, so insects are related to pitcher plant here. Now mark T if the statement is true and F if it is false. Okay, let's figure it out. So first one is carbon dioxide is released during photosynthesis. Is carbon dioxide released during photosynthesis? What do you think? I think no, it is being absorbed. Oxygen is released during photosynthesis.
Okay, so this statement is false, the first one. Now, second one, plants which synthesize their food are called saprotrophs. Do saprotrophs prepare their own food? Are they even green in color? Do they possess chlorophyll? No, this statement is again false. They can't perform photosynthesis. They are the plants which synthesize their food are called autotrophs, not saprotrophs. They depend on uh, they uh, they live together with their partner in a symbiotic relationship. Okay, so saprotrophs cannot synthesize their own food. Autotrophs can. So this statement is false. Let's move on to the next question, which is the product of photosynthesis is not a protein. Okay, so what else is the product of photosynthesis? It is uh, it is uh, uh, carbohydrates and oxygen, not protein. So yes, this statement is true. फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्रोटीन नहीं बनता है बल्कि कार्बोहाइड्रेट बनता है. ओके, सो solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Yes, plants use sunlight, that is a source of solar energy, and convert it into chemical energy to perform this chemical reaction called photosynthesis. Okay, so this statement is true. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Which part of plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Root hair, stomata, leaf veins, petals. Which part of plant takes in carbon dioxide? We know that these are the tiny pores present on the leaf and is called stomata. Okay, now the 12th is choose the correct option from the following. Okay, plants take carbon dioxide from atmosphere mainly through their roots, stem, flowers, leaves. So which part is that of plants that take carbon dioxide? So stomata कहाँ present होता है? Stomata present होता है leaves में. So leaf is that part of plant that take carbon dioxide from the atmosphere. Okay, so it is leaves. Now this last question, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? This last question you will do yourselves. This is for you, this is your assignment. You can explore about it and learn about it yourself, and I hope you liked this session. So if you like it, you can share this with your friends, and if you find it useful, you can subscribe the channel as well, and you can also like this video. And in our next session we will learn about the next chapter, and we will now meet on the 17th of August maybe, and tomorrow we will learn maths. Okay, we will learn about fractions and decimals. So now please take care of yourself, and we will meet tomorrow at the same time. Till then, take care of yourself. Bye. Have a